Welcome back, students, to yet another interesting session of instruments. So the reason I've taken this chapter is because there are only few topics that we are going to see in this particular chapter. CRO, function generator, and digital multimeter. Out of which, I think CRO and CRT, cathode ray tube, which is used in CRO. Both the topics we did it yesterday in yesterday's video, right? So we are left with function generator and digital multimeter. Now in function generator, the major chunk of it is the block diagram, which is being deleted. Okay, as we go on, I'll tell you the page numbers as well, but that is deleted. Okay, so you just have to understand what is function generator, that's it. And then we will jump onto the digital multimeters. I will explain everything as and when we go on, proceed with our PPT. I'll just share my screen and I'll show you what am I talking about. Okay, so yesterday we did about CRO, right? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मतलब जो सीआरटी हमने लर्न किया था वो यूज कहाँ करते हैं हम, right? That was CRO, cathode ray oscilloscope. That was, if for those who just missed it, you can check my previous video, and for those who are new, this is something CRO. ये जो दिख रहा है ना आपको फ्लोरेसेंट वेवफॉर्म्स जो बन रहे हैं, वो उसके लिए हमें CRT लगता है, कैथोड रे ट्यूब लगता है. इलेक्ट्रॉन जहाँ हिट होता है वहां पे फ्लोरेसेंट स्पॉट आता है, तो वो स्पॉट हम ट्रैक करते हैं. इलेक्ट्रॉन बीम को हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाते हैं और वेवफॉर्म हम ड्रॉ किया जाता है. So that was a device. It is used for measurements of voltages, time, and everything we can measure using this particular device. Next, we're coming to function generator. Okay, now before this, I would like to talk about function generator. Function generator. कुछ तो जनरेट कर रहा है वो, राइट? सीआरओ क्या था? मेजर कर रहा था चीजें, वो खुद का कुछ नहीं बना सकता, राइट? बट फंक्शन जनरेटर इज अ डिवाइस with which you can generate waveforms. आपको साइन वेव चाहिए, कोसाइन वेव चाहिए, ट्रायंगुलर वेव चाहिए, any type of waveform if you want to design, then you will use a function generator. Okay, so it is basically a device or a piece of electronic equipment that is used to generate different types of electrical waveforms. Okay, that is what do you mean by function generator? Okay, so different waveforms, I told you, triangulars, या फिर commonly जो use होता है वो sine wave, square wave, triangular wave, sawtooth wave, ये सब हम use कर सकते हैं और हम control कर सकते हैं the frequency range I want to use in that particular generator. मैं जो sine wave use कर रही हूँ for example एक particular device के लिए I need XYZ range of frequency, then I can change the frequency of the generated waveform as well. So that particular device is known as function generator. Okay, and the frequency range in which this generator can be used, in this particular function generator can be used to 0.01. इतना small frequency से high frequency signals भी हम बहुत high frequency नहीं, like telecommunication related उतने high frequency में तो नहीं use कर सकते, but you can generate signals, you can generate waveforms in the range of 0.01 hertz to 100 kilohertz. Okay, in that frequency range, whatever signal you want to generate, that can be generated. Fine. So now, for example, sawtooth waveform. Sawtooth waveform कैसे होता है? Triangle जैसे होता है. So that can be attained by using an integrator, जिसमें capacitor है. Capacitor charge होगा, discharge होगा, charge होगा, discharge होगा, charge होगा, discharge होगा. तो ऐसे अलग-अलग चीजें उसके अंदर हैं, इसीलिए वो generate कर पा रहा है. Okay. Now I'll show you the picture of how it looks. All this is available in our lab. So I guess you can have a look also if you want to, just have a look and see how it looks actually. So this is how a function generator
looks like. There are various knobs and depending on कौन सा आपको waveform चाहिए, depending on that you can select it. Okay, so it different types of waveforms and over a wide range. मैंने range बता दिया आपको 0.01 hertz to 100k kilohertz तक आप frequencies इससे generate कर सकते हो, and then you can give it to your desired device. But in your book, the block diagram is given, that is omitted. I would like to tell you the page numbers. If you are using Fadke publication page number 17, page number 17 is omitted. And if you are using Kinneri publication, I'm I've got both things open because some of you all may be using this, some of you all may be using that. Question number 15 of Kinneri publication, question number 15 is deleted. Okay, a function generator use किया कहाँ हो सकता है? तो like I told you, it is used wherever you need to start something, जहाँ पे input sine wave चाहिए. For example, मुझे चाहिए 1 kilohertz sine wave, and then my system will start working. But then you can use a function generator. Okay, so all types of signals देने का काम है function generator का. Now the third device and the most important and interesting device is multimeter. Multimeter मतलब मीटर है, ठीक है, and it's going to measure various things. बहुत चीजें measure कर सकते हैं. Number one, voltage can be measured. मैंने एक circuit diagram बनाया है, resistance है उसमें, so I want to measure the voltage across that resistance. You can do that. Current, if I want to measure कितना current flow हो रहा है मेरे छोटे से circuit में, that can be measured. Number three, resistance. You know, sometimes what happens is you get insulated if your entire package is insulated, or you're not understanding what is the resistance value of a particular resistance. You have to measure करना है आपको, तो आप resistance भी measure कर सकते हो, and many more things. यही सिर्फ नहीं, transistor ठीक ठाक है क्या, वो diode checking, wire short है क्या, open circuit है क्या, everything can be done using a digital multimeter. But multimeter are of two types, analog and digital. Analog के बारे में आपके syllabus में नहीं है. I'll just show you pictures to make you understand what is the difference between digital and analog. Okay, so as I told you, it is a combination of a voltmeter. Voltmeter means it measures volts. Ammeter means it will measure current, and ohm meter means it will measure resistance. तो 3-in-1 हो गया, ये तो बढ़िया हो गया. But there are two types, analog है, digital है. आपके syllabus में सिर्फ DMM, that is digital multimeter, ठीक है. But कैसे दिखता है, ये थोड़ा सा extra information है. It's very interesting. So we'll just see how analog one looks like. See, this is how an analog one looks like. Okay, so the analog one, I'll make myself small so that the other things are visible. This is an analog multimeter. Okay, so analog में क्या है? If you can see, there are two knobs. This is a negative and this is a positive. Okay, two wires are there. यहाँ पे एक switch है, ये एक switch है. Switch, if you change the connections, it will change its particular usage. It will change into ohm meter, voltmeter, ammeter. ये knob से आप select करोगे आपको क्या measure करना है, ठीक है. And as you can see, the scale is analog. It is simply the movable है. The pointer will point at a particular number and that will be your reading. Okay, so this is analog. So how will you measure resistance? Now this measuring part is common for digital and analog. Okay, resistance कैसे measure करोगे? आप positive terminal red वाला knob यहाँ पे लगाओगे, black वाला knob यहाँ पे लगाओगे, ये switch को turn करोगे ohm meter के section में, and then you will see the reading. तो आपको resistance मिल जाएगा. Current कैसे measure करते हैं? Current हमेशा series में measure करते हैं, है ना, series. तो जो भी resistance है आपका बैटरी है, उसके series में आप plus minus red color वाला knob यहाँ पे लगाओगे, black color वाला knob यहाँ पे लगाओगे और measure करोगे knob ammeter में लगा के. Current is measured in series. Voltage is measured in parallel. So यहाँ पे plus minus डालोगे, यहाँ पे knobs attach करोगे,
voltmeter पे अगर आपने knob लगाया, you will be able to see the voltage measurement. Okay, as simple as that. Fine. Now going to the next one. This is the most important thing. Digital multimeter. अब इसमें क्या फर्क है? This is how a digital multimeter looks like. Okay. Obviously, resolution पे depend होता है वो उसकी accuracy. Resolution means how many digits can be seen on the screen. Okay, that is the resolution. This is a traditional DMM used everywhere. Even we have used it when we were in engineering and post-engineering also. We used it in our post-graduation also in MTech and all. We used to use the same DMM. So we have worked a lot on this. If you can see, there are various sections. ये V वाला section दिख रहा है. अगर ये नॉब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब ये वोल्टमीटर जैसे काम करेगा. ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ वोल्टमीटर. यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज स्ट्रेट लाइन, मतलब डीसी वोल्टेज मेजर करेगा. आपको एसी वोल्टेज मेजर करना है तो ये V, और आपको इधर साइन वेव दिख रहा है. साइन वेव मतलब दिस विल बी मेजरिंग. अगर ये नॉब मैं स्विच करूं और नॉब यहाँ पे लाऊं तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ, दिस विल बी मेजरिंग एसी वोल्टेज. ए दिख रहा है, ए. दिस विल बी, अगर नॉब इस तरफ लाऊंगी मैं तो देन इट विल बी एक्टिंग एज एन एमीटर. फाइन. नेक्स्ट, इधर ओम दिख रहा है, ओम. अगर मैं नॉब यहाँ पे लाई देन दिस विल बी एक्टिंग एज एन ओम मीटर. ठीक है. अब ये वाले यू जस्ट not necessary, आपको it's not necessary for you. This is all for other measurements, diode testing and HFE of transistor and everything. ठीक है, वो सब measurement के लिए है. आप ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. ट्रांजिस्टर को ऐसे इंसर्ट करना पड़ता है and you can check that also. यहाँ पे knobs रहेंगे. ठीक है, and वो knobs आपको connections के लिए काम आएगा. Now this is how it actually looks outside. अब अंदर क्या चल रहा है ये देखिए. अंदर what are अंदर क्या क्या है. ये जो स्विच आप जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं ना, वैसे वैसे this is, ये जो कनेक्शन है ये बदल रहे हो आप. आपने अगर स्विच यहाँ पे डाला है, that means resistance is measured. तो resistance कैसे measure होता है भाई? Resistance कैसे measure होता है? Directly using a knob. Actually voltage measure हो रहा है. ठीक है, वोल्टेज मेजर हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट करंट सोर्स है. दैट मींस योर बैटरी. ये सब बैटरी पे चलने वाला डिवाइस है. तो बैटरी में से करंट मुझे पता है. आई नो द करंट ओवर हियर. आई एम मेजरिंग द वोल्टेज ओवर हियर. ओके, एंड वी, sorry, I just want to do a different this thing. Just a minute. So I measure, I know V, and V is equal to IR, Ohm's law. I can easily find out R if I know V and I, right? And this is a buffer amplifier, and this will amplify that. And over here, वो इधर जाता है directly to analog to digital converter. क्यों? क्योंकि अभी जो भी value है, I don't have an analog display. मेरा display क्या है? It's a 7-segment display. इसको 7-segment display बोलते हैं. 7 segment क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बीच में भी एक्चुअली है, वो ऑन नहीं है, बट बीच में भी वो सेगमेंट है, वो एलईडी है वहां पे, वो जला नहीं है. ओके, तो दिस इज 7 सेगमेंट वाला है, तो दिस इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले. डिजिटल उसको चाहिए, तो इसीलिए हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो डिस्प्ले. ओके, नेक्स्ट, इफ यू स्विच योर नॉब, this is a simple switch, rotary switch. It's a simple switch है वो. If you switch your knob to calculation of voltage, ठीक है, AC voltage measure करना है, तो first it will go to the calibrated attenuator. This is not alternator, this is attenuator. Okay, attenuator का क्या करता है? What does the attenuator do? Now we don't know, जब हम measure करते हैं particular circuit, इसमें कितना voltage है मुझे नहीं पता है ना. I am directly measuring it. What if गलती से उसमें बहुत high voltage है? It will damage the multimeter, है ना. So that is why attenuator, मैंने CRO में भी बताया था, CRO में भी है ये. It will bring down the level of the voltage. उसको नीचे कर देगा, उसको calm down करेगा. Okay, it will cut down. So it will bring its level down. उसका मतलब है attenuator. क्योंकि कितना वोल्टेज है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मेजर कर रही हूँ. What if it's बहुत ज्यादा हाई होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. So attenuator brings it down the voltage level
देन इट इज AC, है ना, AC है। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो आई नीड DC वोल्टेज, DC वोल्टेज में काम चलेगा ADC में। सो दैट इज व्हाई अ रेक्टिफायर सर्किट इज यूज्ड। याद करो चैप्टर 2 पावर सप्लाई रेक्टिफायर सर्किट, है ना, AC टू DC कन्वर्ट करता है, वो रेक्टिफायर सर्किट पे जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। तो जितने भी AC कन्वर्जंस है ना, AC वोल्टेज, AC करंट, वो सब रेक्टिफायर पे जाएगा, बाकी सब ब्लॉक्स सेम है। ओके, वो रेक्टिफायर पे जाएगा और डिजिटल आउटपुट आएगा। जो DC मेजरमेंट है, DC करंट एंड DC वोल्टेज, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, we don't have much problem for that. Okay, simple current to voltage converter यूज किया जाएगा and that for current only, हाँ, and वो डायरेक्टली रेक्टिफायर सर्किट को दिया जाएगा। अब ये जो करंट वाले फैक्टर्स है, AC करंट एंड DC करंट, इन बंदों को एक और ब्लॉक लगेगा एंड दैट ब्लॉक इज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक है, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में ओपैम यूज होता है। ओके, and op-amp is used and through the op-amp it is converted into voltage, current is converted into voltage and then it is given to the rectifier, क्योंकि current directly rectifier circuit को हम नहीं दे सकते, है ना, so इसीलिए current to voltage converter यूज किया है and then it is given to the rectifier circuit, analog digital converter and to the digital display. So what all you have to remember in this, this is a much detailed block diagram in your textbook, much smaller in your if you're using Kinnery publication, much smaller block diagram is used and I think that will do very much, that's not a problem at all. So first thing आपको क्या याद रखना है, दो चीजें, AC DC याद रखना है, AC DC दो चीजें याद रखना है, AC DC को अलग, रेजिस्टेंस तो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रीटी क्लियर, रेजिस्टेंस किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। वोल्टेज और करंट के दो चीजें आपको याद करना है, AC DC इन बोथ वोल्टेज एंड करंट, करंट में भी होगा AC DC, वोल्टेज में भी होगा AC DC। तो ये जो दो चीजें हैं AC और DC, ये दोनों में होगा, वोल्ट में भी होगा, करंट में भी होगा, सो दैट यू हैव टू राइट 4 टाइम्स। ठीक है, AC AC DC DC, एक में वोल्टेज एक में करंट, एक में वोल्टेज एक में करंट। करंट होगा तो हम करंट डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वोल्टेज में। वोल्टेज है तो डायरेक्टली हम दे सकते हैं, इफ इट इज AC देन रेक्टिफायर सर्किट, अदरवाइज डायरेक्टली टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, देखिए इधर देखिए, ये DC है, ये भी DC है, तो उसको वो रेक्टिफायर सर्किट को दे रहे हैं क्या हम? नहीं, वो तो डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर AC DC, AC होगा तो उसको DC करना है, DC होगा डायरेक्टली भेज दो। ठीक है, और AC DC दोनों भी वोल्टेज में भी आएंगे, करंट में भी आएंगे। ओके, सो I think things are clear in this particular block diagram. ठीक है? Now here we end the chapter. Okay, the chapter explanation, all the 3 devices is done. Quick, you are lucky this time that majority, many things of Lesage's pattern and all is cancelled this year. So if you go to see numerical wise, I have discussed one formula for CRO, that is sensitivity. Okay, deflection sensitivity, that is what I've written on the board. Deflection sensitivity पे numericals आ सकते हैं, so we will just quickly do that. Okay, the first one, when 20 volt DC is applied to a vertical deflection plate of CRO, spot moves from, I hope आपको याद रहेगा, स्क्रीन पे CRO के स्क्रीन पे 0 से कितना ऊपर और या कितना नीचे गया वो स्पॉट, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। वो मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, 0.2 मीटर गया है ऊपर, 0.3 मीटर गया है वो, तो अब ये सेंटीमीटर में दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, सब कुछ उसमें दिया है तो नो प्रॉब्लम।
हाँ, द स्पॉट मूव्स 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से वो 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर मूव किया है, नो प्रॉब्लम, सेंटीमीटर में दिया है. If 20 volt AC is applied, what will be the displacement of the spot? Okay, as simple as that. ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये. I've written it over here. Please, if you can see it, just a minute. I am not getting. हाँ, see, I've written it here. 20 वोल्ट डीसी पे 4 सेंटीमीटर हिला वो स्पॉट, 20 वोल्ट डीसी में 4 वोल्ट हिला, तो 20 वोल्ट एसी में कितना हिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, समझ में आया? 20 वोल्ट डीसी में 4 सेंटीमीटर हिला, वो पूछ रहे हैं 20 वोल्ट एसी में कितना हिलेगा, वही लिखा है ना मैंने. तो क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? So 20 volt AC, it's very difficult to write like this, is equal to 4, oh sorry, not is equal to, into 4 upon 20 volt DC. ठीक है, right? Now 20 एसी मैंने पावर सप्लाई के चैप्टर में भी बोला था, जो एसी डायरेक्टली क्वेश्चन में देते हैं वो ले सकते हैं क्या हम? नहीं, वी कैन टेक ओनली द आरएमएस वैल्यू. सो वी नीड द आरएमएस वैल्यू. तो 20 एसी का आरएमएस क्या होता है? 20 इंटू √2. तो ये AC का हमको RMS वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने किया 20 इंटू √2. लेकिन ये 20 तो सिर्फ हाफ पीक है, इतना ही है. इतना ही सिग्नल लगेगा क्या हमको? नहीं, सिग्नल तो पूरा यहाँ तक होता है. दैट मीन्स पीक टू पीक लेना चाहिए हमको, राइट? तो 20 तो सिर्फ एक पीक हुआ. सो क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? पीक टू पीक होगा तो I will multiply it by 2. Okay, so the final calculation will be 40 into √2 into 4 upon 20. DC को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, into 20. इसको आप सॉल्व करेंगे, you will get the final answer. Okay, the final answer after calculation comes out to be 11.314. 11.314. It's given in centimeters, I am presuming. Centimeters. Okay. What is the form? ये तो simple मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई किया. But there is another way to do it. Look on my board. इसमें तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई किया. Now look at the board. According to the formula, what is the formula? Deflection sensitivity is displacement, कितना हिला वो, अपॉन कितना वोल्टेज दिया था. तो पहले कितना वोल्टेज दिया था? 4 वोल्ट्स दिया था अपॉन 20. सो द आंसर इज 0.2 सेंटीमीटर्स, राइट? बट ना अभी हमको वोल्टेज चेंज करना है. ये तो डीसी वोल्टेज था, अभी हमको एसी वोल्टेज चाहिए, राइट? तो यही 0.2 जो मिला है हमको, 0.2 सेंसिटिविटी जो मिला है, नाउ वी वांटेड फॉर आर 20 वोल्ट्स AC. 20 वोल्ट्स AC के लिए चाहिए, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगी 20 वोल्ट्स AC के लिए, है ना? इफ यू कैन सी इट, 20 वोल्ट AC. जस्ट अ मिनट, I will stop sharing so that my blackboard is visible properly. मुझे ये 20 DC के लिए था, ठीक है? अब मुझे चाहिए 20 AC, तो मैं सिंपली इसके आंसर को मल्टीप्लाई करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी. 20 AC क्या होता है? 0.2 इंटू पीक वोल्टेज चाहिए, इसलिए 2 इंटू 20 इंटू RMS चाहिए, इसलिए √2. बस इसका फाइनल आंसर होता है 11.314. Same answer you will get your maximum displacement, therefore in centimeters. Deflection sensitivity का ये फॉर्मूला है. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा. ओके, I think I've made myself clear. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन वोल्टेज, और जो नया वोल्टेज है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, you will get the displacement.
Okay, let's go to the next one. Is similar. You can take it for homework also. Same type hai. Same type hai. It's you just have to take it for homework. Second one. The spot is shifted by 4 centimeter when 10 volt. Oh, sorry. Is applied hona chahiye. Is apple nahi. I'll just change that. Okay. A spot is shifted by 4 centimeter when 10 volt DC is applied. Find maximum displacement of spot when 8 volt AC is applied. Same problem. ठीक है. तो क्या पूछा है 4 जब 10 वोल्ट अप्लाई किया था डीसी है तो 4 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है. तो इसका सेंसिटिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हो. 4/10. ठीक है. मैं अभी इसको डिविजन नहीं कर रही हूँ. ठीक है. 4/10. फॉर्मूला क्या है मेरे ब्लैक बोर्ड पे देखो. स्पॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वोल्टेज. स्पॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वोल्टेज वही किया मैंने. ठीक है. अब ये था 10 से 8 वोल्ट में कितना होगा तो मुझे 8 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन ये है एसी है कि नहीं. ये है एसी. दैट इज व्हाई आई नीड टू मल्टीप्लाई इट्स आरएमएस वैल्यू. और जैसे मैंने बोला पीक वैल्यू चाहिए तो मैं पहले 2 × 8 करूंगी. फिर आरएमएस के लिए √2 होता है. वो तो फॉर्मूला हमको पावर सप्लाई के चैप्टर से ही आता है. तो उसका फाइनल वैल्यू होता है. इसको × 2 करना पड़ेगा. That will come something around 22.628. Okay, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. सिंपल. into 22.628. Whatever answer you get is the answer in centimeters. Okay, I hope it's very easy and it's scoring. If you get such numericals, do not leave it. And I have skipped steps such as given, to find and all. Please go stepwise. Okay, so that's it for today. So our chapter 1 instruments is also done. We'll quickly do transducers also, so that, or maybe I'll take some other chapter. I'll see. I'll get back very quickly and we'll finish our portion very quickly. In digital electronics, that is paper 2, only one chapter is left, that is logic families. And here in applied electronics paper 1, we have 2 more chapters, transducers, and last chapter study of integrated circuits, which we will complete very soon. Fine. Please feel free to reach out to me if you have any problems, any doubts. Even if the video is lengthy, pause करके ठीक से देखो, क्योंकि deleted portion मैंने videos के अंदर ही बोल दिया है. Okay, so and any doubt, please leave it in the comment section, or you can get back to me personally as well. I'll be there to help you. Okay, thank you. Have a great day.